अरे फ्लैग भी आ गया, क्या मस्त। माइग्रेशन इमिग्रेशन इधर होएगा डीजे। One world, one ride. Hello guys, this is Debashish and welcome to the channel. Today I told you in my previous video that I wanted to change the format, but right now I'm quite confused. There are so much things to show. I just need your help for this. Option 1, जैसा चलता है चलने दो. Option number 2, I cut on the ride part and show the main things and finish the world ride in 2-3 episodes, and in 2-3 episodes I will finish the world ride. 2 घंटे का एक एपिसोड मार के 2-3 एपिसोड में I can finish the world ride. That is option number 2. Option number 3, again I cut down the riding part, but then अच्छा नहीं लगता यार राइड. Roads were so beautiful, but तभी भी I will lessen the riding part, and conversation was not much because DJ was not talking much. So, and why DJ was not talking much? Not because we had a problem, but you are on roads for 9 months. क्या बात करेगा? कितना बात करेगा? So, but there were beautiful roads. But I will, थोड़ा शॉट डाउन करके एंड 2-3 दिन का एक ही एपिसोड में दैट विल बी ऑफ 30 मिनट्स. दैट इज ऑप्शन नंबर 3. एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ओके एवरी डे का एपिसोड, बट एट द beginning of the video I can answer some Q&A of yours. So please comment below and tell me what format would you want. Now, if you ask me about my choice is, I would like to show you everything, whatever I have recorded, most of it. But then yes, I would definitely like to get an input from you guys. That will be really, really nice. और दूसरा, the videos are not regular because seriously I'm not getting enough time to edit it. I'm trying to streamline my business right now, so because I was not here for 9 months. Yeah, the business was so I need to get it back in shape. This is the reason I don't get much time to edit my videos, but I'm trying my best to put 2 videos at least in a week. So it will be Thursdays and Sundays. And if I'm riding, don't get confused with the World Series, and because I've seen so many people commenting, अरे अभी तो Honda Goldwing का इसमें था, अभी यहाँ पे था. So understand this is my previous videos which I give dates also. What I can do is the world ride will continue. If I go for any other ride, if I record it, then definitely I will put in between. So this is how we can work on it. So please give your comments, and now please enjoy the video. Bye. Jai Shri Ram. Good morning guys, this is Debashish. Today we're gonna go to Tumbes, which is in Peru. Another day, another border crossing. I'm gonna say bye bye to Ecuador. Bye bye. Lovely people. You have no idea how lovely people are in Ecuador. So we had stopped here for coffee. DJ didn't have anything. I just had a coffee and a cupcake. The thing is, we missed a turn, and because we don't have internet, it doesn't reroute. So I think we should go straight, and we should take left, and I think we'll get on the way.
तो अपने को इधर जाना पड़ेगा डीजे। नहीं, सालिदा डेल पे सीधे डेली पास है शायद, सालिदा डेली पास। क्या करने का है? इसमें जाने का ना? हाँ, इसमें अंदर जाने का ही है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ तेरे को। हाँ ठीक है, यहाँ से पैसा ले। अब वो आगे का थोड़ा मार लिया था। वो क्या उधर कौन है वो? ये होगा ना? अरे माँ क्या बचाने वाला आइटम है रे। तो गाड़ी चेक करने का है। हाँ अरे वाह, ये कौन है? Hey! You going or coming? Peru? English? You speak English? You speak English? You're going to Peru or coming from Peru? Oh, okay, me too. Peru. Now just getting our paperwork done. India. Both. India. Yeah. Okay, we are at the Ecuador border. This is the document which you get when you enter, which you need to submit it to that lady over there. So she's gonna stamp out, then you got to go to the immigration and stamp yourself out. That's the process. So you give that document which I showed to this lady. She's gonna stamp it out and she's gonna keep it to herself, and then she'll tell you to click the photograph for your records that things are done. Now for exit of the चलना यार. Now for the exit of your passport, you will have to go back 4 kilometers. It doesn't happen here. Only your vehicle gets exited here. इक्वेडर तो आ गया, बोर्ड आ गया सर. ये होएंगे ना, ग्रासियस, थैंक यू, डू विजिट अगेन टाइप्स. डीजे फोटो, डीजे वेलकम टू पेरू फोटो बनता है ना बॉस? चल लगाओ. पहले तू तेरा ले ले बाइक का. चल दे दोनों हाथ में लेते ना भाई. क्या है ऐसा? तेरा मेरा क्या, तेरा और क्या मेरा, बाजू में लगा दे दोनों, है ना? अरे और आगे मत जा रे. चल थोड़ा सफेद पत्ते पे रखना. हाँ चल ठीक है, थोड़ा पीछे ले ले. चलो यार, मैं भी क्या बंद कर लेता. वो पेरू की लेडी है तो वो पेरू में मदद कर देगी. अभी अपन यहाँ से बाहर हो. पेरू क्या इधर ना? राइट सीधा क्या डीजे? अभी क्या मालूम, देखते हैं. चल ना, ये इधर है ना. चल. अरे पेरू को फोटो दे ले. एक मिनट जरा. पेरू का फोटो? हाँ चल रे. उधर तो वेलकम टू पेरू लिया था ना अपन ने. और मेरे को लगता है यहीं अपने को सब फॉर्मेलिटी कराना पड़ेगी. रुक, ये बाइक खड़ी कर किसी और की भी. चलना, रुकना, मेरे को तो आता ना कैसा लेने का. रुक, खड़ा रख. अरे फ्लैग भी आ गया, क्या मस्त. माइग्रेशन, इमिग्रेशन इधर होएगा डीजे. रुक अभी. अरे चालू है डीजे है. रुक, आजा बाजू भारा. सही है. जा बीच में खड़ा रहे. दोनों के बीच में खड़ा रहे डीजे. वो आधा नहीं दिख रहा है. हाँ परफेक्ट. अरे हाँ भाई,
डीजे इधर इमिग्रेशन So this is, I think this is the building for immigration, and yeah, we will get our immigration done. Exit, entry, exit. I think both are at the same places. Let me find out, and I'll get in touch. Okay, so the procedure is quite simple. That is the immigration. You go inside the immigration, get yourself exited from Ecuador, and then besides that, you have another counter where you can get stamp yourself on a passport in for Peru. After that you go, that is the building over there. There you get your bike's permission. First you go to the customs, get your bike permission. They'll give you a printed format of your bike permission, which you have to give it to the border of Peru. Now from there, after getting the bike permission, go to another counter, same building, where you can buy insurance that is gonna cost you $30. Well, that was the information, and from here we're gonna leave to Tumbes. So the permissions and everything is done, and Tumbes, here we come, Peru, here we come. Tumbes, Puria, कल का अपना स्टॉप है प्यूरिया. आज तुम्बस चलते हैं, रुकते हैं, ठीक है, और फिर कल का अपन देख के अपन आगे का करते हैं, ठीक है. चल, ठीक है ना. हाँ, जैसी तेरी मर्जी. अरे जैसी तेरी मर्जी नहीं, अपन दोनों की मर्जी होनी चाहिए. मैं होता तो मैं तो मेरा अभी और 200-300 किलोमीटर मारता, क्योंकि क्या है पूरिया चलने की. अभी तो 3 ही बजी है बैंक. क्या हाँ, तो चल पूरिया चलते फिर. नहीं भाई, कल से कुछ होगा करेगा तो फिर जबरदस्ती बिल फाड़ता रहते. अरे क्या यार डीजे, जब मैं तेरे को मैं सामने से बोलूं तो तू जबरदस्ती उल्टे बात कर रहा है यार. नहीं तू ये तुम बस ही चल. मैं कब फाड़ा रहा तेरे पे बिल? हाँ डीजे, नहीं फाड़ा. कब फाड़ा मैंने बिल? हाँ. तो फिर क्यों ऐसा एलिगेशन डालता? वापिस ले लेता हूँ मेरे साथ. हाँ, मैं फोन वापिस ले लेता हूँ. क्या दादा, तुम भी जबरदस्ती का यार. क्या झंडा दिखा रहा. अभी आगे जो भी है गली आएगा, वहाँ से राइट है. ये नहीं, यही है. ये जो सिग्नल पे गली है ना डीजे, आई थिंक वहाँ से राइट है. इधर ही किधर तो है ये होटल. ये डीजे, ये खोलेगा गैरेज. ये है ना. चल मैं इसको पूछ के आता. मैं खड़ा. 2 rooms. ¿Tiene reserva? No reserva. ¿No tiene reserva? No reserva. ¿Tiene habitación? ये hola. 2 rooms. 2 rooms. ¿Quiere una habitación con 2 camas? ¿Eh? Una habitación
For tonight, those room, those people. Una people, una room. Fourth floor. डीजे चौथे माले पे. हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay guys, so we have reached Peru, Tumbas. We checked into a hotel. Hotel is nice, okay. I don't know what is the price because they said they're gonna charge tomorrow. It should be around $40-50. Tired? Not exactly, but because there were border crossings, so you know we didn't keep much kilometers from the border. We need to understand the roads here. So yeah, to all the lovely people who are watching this, I hope I have given the best of information I can of the Peru border and Ecuador border. And yeah, enjoy and stay blessed. Bye bye. And tomorrow we'll see where we go. It should be around 400-500 kilometers. I hope the roads are good. Till then, bye bye. One world, one ride. Official. Hola. English, please.